Good morning student, how are you? I hope you all are fine. Today in this module we will learn about collecting data using tally marks from pictograph chapter. So frequency distribution table. This is tally mark. Tally mark को शो करने के लिए to represent 1 we draw one vertical line. To represent 2 we draw 2 vertical line. To represent 3 we draw 3 vertical line. To represent 4 we draw 4 vertical line. To represent 5 we draw 4 vertical line and 1 slanting line over the fourth tally marks. Now this is 5, 1, 6. To represent 6 we draw like this. To represent 7 we draw 5 plus 2 7. To represent 8 we draw 5 plus 3 8. To represent 9 we draw 5 plus 4 9. To represent 10 we draw 5 plus 5 10. Like that we have to draw tally marks. tally mark हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड और जो फिफ्थ टैली मार्क होती है वो हम फोर्थ टैली मार्क के ऊपर करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. स्टूडेंट, यू सी दिस क्वेश्चन. द डेटा गिवन बिलो shows the fruits flavored by different number of children. Represent the following data using tally marks. Favorite fruits and number of children. Fruits are apple, banana, mango, grapes, orange, peach. Number of children liked. 8 children like apple, 10 banana, 12 mango, 9 grapes, 7 orange and 4 peach. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट आप कॉलम बनाएंगे 3 1 2 3 कॉलम बनाएंगे. आफ्टर दैट यू राइट फेवरेट फ्रूट. इन द मिडिल यू राइट टैली मार्क्स एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू राइट हियर. ओके, नाउ एप्पल कितने चिल्ड्रन का फेवरेट है? 8 चिल्ड्रन का फेवरेट है. सो वी ड्रॉ टैली मार्क 8. How you draw the tally mark? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now banana 10 children का favorite है. How you will draw tally marks? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो फिफ्थ लाइन होगी वो फोर्थ को क्रॉस करेगी. ओके, नाउ मैंगो 12. So we draw 12 tally mark. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now grapes 9 children का favorite है. To represent 9 you will draw 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now orange 7. So you represent 7 tally mark like this. 1 2 3 4 5 6 7. Now 4 children liked peach. You draw 4 tally marks like this. 1 2 3 4. Like this you have to draw tally mark. I hope your concept is clear. Now it's practice time. 14C, page number 181. Question 1. The data given below shows the number of apples with 5 girls: Ina, Tina, Meena, Reena and Leena. Represent the following data using tally mark. Name of the girls and number of apples. tally mark के थ्रू आपको ये रिप्रेजेंट करना है. Now question 2 है. The data given below shows the number of children having pencils of different color. Represent the following data using tally marks. Color of pencil and number of children. These two questions which are given in practice time you do yourself in your notebook. So pause your video and complete your work. I hope you understand the concept of frequency distribution table very well. Thank you. Bye bye.